as the Witch Evo is coming to Clash Royale. I tried this challenge of giant graveyard deck with Witch from ChatGPT. Hope you enjoy this video. Finally time आ चुका है that I make this giant graveyard deck. Let's check. I think I can trash this one. मुझे मिनी पैका चाहिए. बाकी giant graveyard deck. I get. हमें पता ही है कि which evolution is the next evolution, and so I'm pretty sure that this is going to be the best one because graveyard and giant are working very well. Start building the deck. Honestly उसने सबसे पहले तो giant लिया है, giant, then graveyard, witch already है, baby dragon is an epic card. Here we are. Then we get a mini P.E.K.K.A already present. Then we need arrows. It's a common card. Zap, skeleton army. Where is Zap? I got skeleton army. Zap. Oh, come on, man. Alright. लेवल्स तो काफ़ी अच्छे हैं. आई डोंट थिंक आई हैव एनी प्रॉब्लम्स, बट मैं अभी इसको मेन लैडर पे तो नहीं प्ले करूँगी. लेट्स ट्राई एंड प्ले इट फर्स्ट इन द 11 फ्रेंडली लेवल मैचेस. अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी अर्ली गेम मुझे विच और बेबी ड्रैगन को ही साइकिल करना है विथ मिनी पैका एंड स्केलेटन आर्मी और बैट्स. I've taken skeleton army, so let's see what happens. Actually skeleton army is a little risky to play. Yes, he didn't hit my witch. I knew it. Let's get the graveyard ready. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Don't. Let's get some good hits. And I got a good hit. Great. I'm ready with mini P.E.K.K.A. No. इतना ज़्यादा डैमेज तो ये देगा भी नहीं. Pretty sure he wouldn't. इसके पास एक्सबो एंड टेस्ला है ना. I would need good enough backups. I think skeleton army would be great, but let's just hope कि उसके पास evo टेस्ला ना हो, or else it's going to be a problem. Let's tank. Great. Oh, she got the hit again. That's great. Okay. Would I be able to hit him? No, I don't think so. यार नहीं. Not my giant. Yes, thank God. Okay. I think I overspent with my giant raid. I got witch. And let's go giant again. Don't freeze my witch. Thank God he didn't. And now we just do graveyard. 3, 4, 5. Come on. Yes. Oh no, rocket.
Let me place the giant on the back. And yes, okay. Okay. Let's go graveyard. There it is. When they spawn closer by. I'm not that used to mini P.E.K.K.A. मैं मिनी P.E.K.K.A को इतना ज़्यादा यूज़ कभी नहीं करती. So I'm very much unsure if I'm a good mini P.E.K.K.A player. Okay. One hit. Woo! That was great. That was actually great. Okay, I think I did good, पर उसका ऑलरेडी डेक ही एक्सपो टेस्ला था. आई डोंट थिंक दैट इन द करंट मेटा एक्सपो टेस्ला इतना अच्छा चल रहा है क्या. अभी के मेटा के हिसाब से आई डोंट थिंक कि एक्सपो टेस्ला इतना अच्छा चल रहा है. इट्स अ वेरी स्किलफुल डेक. ऑनेस्टली एक्सपो इज सो इरिटेटिंग. एंड व्हाट इफ इट जस्ट डजंट कनेक्ट लाइक द मोटर. Okay. Okay, let me. Okay, let him go. Let's see what he has. Okay, he's playing Goblin style. Great. The abilities too soon. Okay, he has log. What if? Still the baby got a hit. Let's cycle the giant. Getting my witch ready. Come on, I'm going to mini P.E.K.K.A you. Worst. Thank you so much. You brought them together, bro. That's the best you could have done for me. That's an easy win. Come on. I knew it. Guess who just gave up? Tires. Princess emotes are the best. अभी तक बहुत मज़ा आ रहा है, बट अभी तक मैं एक भी मेगा नाइट डेक के अगेंस्ट नहीं आई हूँ. और उसने गॉब्लिन स्टैंड बहुत ही ख़राब यूज़ किया था. दैट्स फॉर श्योर. इतनी जल्दी कोई एबिलिटी यूज़ नहीं करता यार. हाउ कुड यू. Oh. Okay. No! Damn it. That hit was way too much. Okay. At least टावर को टच तो हुआ. नहीं, मैंने जल्दी कर दिया ना शायद. आई थिंक सो. स्केलेटन आर्मी यूज़ करेगा अभी. Oh, that was great. इस टाइम पे लॉग ऑनेस्टली बहुत सैटिस्फाइंग होता. ओह कम ऑन यू फायरबॉल माय विच. दैट वाज बैड.
that was very good for my mastery. ये इतनी इजीली तो नहीं जीतेगा. I need to get my arrows ready. कुछ भी हो सकता है. Seriously, witch के आजू बाजू isn't that बहुत ज़्यादा खेला यार इसने. He looks like a beginner. क्योंकि उसके पास इतने कम कार्ड्स क्यों हैं? Why exactly is he playing so many swarm cards? ओह, बट उसके पास इमोट कलेक्शन तो अच्छा है यार. तो आई डोंट नो इफ ही इज़ अ स्टार्टर और नॉट. बाय फार इट इज़ वर्किंग गुड. मुझे एक भी कट नहीं करना पड़ा एंड आई डिडंट लूज. बट आई एम नॉट श्योर इफ इट इज़ जस्ट फॉर 1v1 हियर और नॉट. विच एवोल्यूशन के बाद आई थिंक आई कैन अनलॉक द विच एवोल्यूशन वेरी इजीली. Because currently I have 4 shards, but I'm very much afraid. Honestly, I don't think a witch का evo लेना चाहिए. The way it is entering the arena, it's going to break it. And to be honest, by far mostly सभी ने ऐसा कहा है कि ये एक arena breaking evolution होगा. तो I'm scared. I mean, taking it and then वो अचानक से उसको nerf कर देंगे. Talking about लंबरजैक, उसके एक साइकिल की जगह 2 साइकिल जब से आया है, आई थिंक इट इज़ वे बेटर, राइट? इवन आफ्टर इट्स 2 cycles, it's good. And I currently have level 13 lumberjack. So let's see. मेरे पास एवोल्यूशन में है तो सही काफ़ी अच्छे अच्छे एवोल्यूशंस. एंड लेट्स सी दिस सीज़न हमें कौन से 3 फ्री एवोल्यूशन स्टार्स मिल रहे हैं ना ऑन द क्राउन इवेंट, द क्राउन चेस. आई एम इंटरेस्टेड इन लुकिंग इनटू भाई हंटर या लंबरजैक इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. डार्क गॉब्लिन आई डोंट यूज़ दैट ऑफन, सो आई एम नॉट श्योर. इवन ईवो ड्रैग, ई ड्रैग, आई डोंट यूज़ इट दैट ऑफन. So I'm not taking these because I'm pretty sure I'm not using them. Executioner also not using it. Bomber जिस भी डेक्स में है मेरे पास ऑलरेडी उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, so I'm not using them. And honestly, who uses these? मैं एक पूरे महीने में सिर्फ इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालती हूँ so that I can just redeem what comes from this path. Other than that, it's of no use. और इनको कलेक्ट करना कितना हार्ड है. आई मीन फॉर ईच कॉमन कार्ड यू हैव टर्न्ड इनटू मैक्स लेवल दे ओनली गिव 1 elite wild card. Still not happy with that, but it's okay. We can work with that. As far as I can see, मुझे एयर में भी इतना कुछ अच्छा नहीं मिला. I didn't go against any dragon decks or something. Let's go for another battle. Let's see what happens. But I think the main deck just revolves around playing the witch better and the baby dragon according to me. Oh, I played it wrong. Should have just mini P.E.K.K.A it. Shit. Okay, what does he have? You have an Inferno Tower. I think let be strong. Okay, he tried his best. She still got 1 hit. Log. Obviously, it's a hog deck. He had a log already. This useless method of chipping down tower points. Come on, grow up.
I mean, I also use it sometimes, so I can't exactly be sorry about it. क्या यार, फिर से मेरे ही जाइन पे लग गया. But guess what? I still have Mini Pekka. What are you smiling for? I guess he's just trying to. Log. I knew it. Bro, please. Come on, तू इन्फर्नो टावर बीच में खेल भी नहीं सकता अब मेरे साथ. Because obviously तेरे पास है ही क्या खेलने को. हट हट. Get out of my way, bro. Aha, again with this log. Still I got some good enough hit points. The satisfaction of that goblin gang going down, man. Log it, come on. मेरे पास था भी नहीं भाई. क्या ही तूने लॉक किया. Let's get it. Let's go. Inferno Tower भेज. Inferno Tower भेज दे. Oh come on, he killed my witch for what? Yeah, it was important. Nahi. The most wrong time to have something. Let's go giant. Come on. I'm not listening to you, bro. तेरा टावर कितना ही लो लेवल पे है. तू पागल है क्या? मैं तेरे अटैक को डिफेंड करूँगी. Come on, you lost. Shut up. Guys, I think I'm very happy with this deck as of now. I guess that's it for this video. You can totally copy this deck and work out with it. After all, ChatGPT ने बना के दी है. And if you try, tell me, do you like it or not? And what do you think could be better fit for any other cards if you want to switch something or not? Do comment and subscribe. Thank you.